ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉरोनरी हार्ट डिजीज की। तो कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू फैट अक्यूमुलेशन डिपोजिशन की। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर्टरी का। ठीक है। अच्छा, लाइक दिस। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है एंडोथेलियम लाइनिंग मौजूद होती है, नजर आ रही होती है बहुत आराम से। यस। ठीक है, एंडोथेलियम लाइनिंग जो होती है वो यहाँ पे बनी हुई होती है और वो बहुत बारीक सी होती है। प्रोटेक्शन के लिए होती है। डैमेज हो रही होती है फिर उसके बाद बन रही होती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है। अच्छा, थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल होती है। अब क्या होता है कि अगर ज्यादा फैट अकोमोडेट कर ली जाती है, खा ली जाती है, तो क्या होता है कि उससे जो है ये इसके ऊपर ये एडहेर होने लग जाती है। ठीक है, जगह जगह पे जब ये एडहेर होती है तो इसके एडहेरेंस की वजह से जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड थ्रम्बोस। ठीक है। ये जो फैट के जो गुठले बनने लग रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड द थ्रम्बोस। अच्छा, कंडीशन जो है वो कहलाती है थ्रम्बोसिस। कंडीशन कहलाती है थ्रम्बोसिस। ठीक है। दैट मीन्स के फैट फैट के डिपॉजिट्स ब्लॉक ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से बेसिकली वो क्या रहा है, ये देखो ल्यूमेन कम हो रहा है। अब यहाँ से ब्लड प्रेशर से पीछे से आ रहा है, या ल्यूमेन कम हो गया तो बैकवर्ड प्रेशर, फिर आगे बढ़ा इधर ल्यूमेन कम है। ठीक है, तो बैकवर्ड प्रेशर। तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। हार्ट गेट्स ह्यूज प्रेशर ड्यू टू आगे फोर फ्रंट के ऊपर ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ मच फैट इन द डाइट में कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि फैट्स दैट आर absorbed in the blood if in excess starts depositing on the endothelium lining of the coronary arteries। ठीक है। अच्छा, this will this will cause the blockage of the artery and stops the blood supply to the particular muscular area of heart। muscular area of heart। ओके। मस्कुलर एरिया जो होते हैं, मसल जो होते हैं उनको जैसे कहा जाए कि हार्ट के वहां तक जो है ब्लड फ्लो नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। The muscles will not get nutrients nutrients and oxygen as well as other benefit
facial factors. This will lead to death of heart muscles. हार्ट मसल्स, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मैंने बात करी है, तो न्यूट्रिएंट्स में सब चीजें आ जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है आपके पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। फिर इसके अलावा अदर फैक्टर्स, बेनिफिशियल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन, ठीक है, अलाउ। अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ कोरोनरी हार्ट डिजीज कैन बी ट्रीटेड। अच्छा, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है वो हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट के कई सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन देते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन जो ड्रग्स होती हैं, वॉरफिन जिसे हम कहते हैं, वो भी दी जाती है। हेपरिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को या ग्लोब्यूल्स को, किसी हद तक जिसे कहते हैं ना, खून को पतला करने में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि खून जो है वो बेसिकली जो गाढ़ा होता है, थिक होता है, वो फैट्स की मौजूदगी की वजह से होता है। तो ये जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, वो काफी हद तक जिसे कहा जाए कि फैट्स को भी डाइजेस्ट करने या पतला करने में, खून को पतला करने में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब चूंकि ये सवाल जो है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर का है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो है हम अच्छा खासा खुल के लिख सकते हैं। इसमें हम स्टेंट का भी जिक्र कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीज कैन बी ट्रीटेड इन मल्टीपल वेज mild to severe cases can be treated by administering different drugs, different anti-clotting drugs like aspirin, heparin, okay, which reduces the risk of blood clotting and fat deposition in the endothelium of coronary artery. अच्छा, in severe cases where complete blockage is there, blockage is present, surgery can be done like angiography, in which blocked vessel is replaced by healthy unblocked vessel
Another method is called angiography. Sorry, angioplasty. Sorry, angioplasty. In which the stent meshwork, small, um, meshwork, small stent is inserted in the, I'm clean all this, okay, as recording तो हुई भी है, inserted the blood vessels, block blood vessels, block coronary blood vessel, where it opens by inflated balloon inside it, this will clean the passage of blocked artery, and increase blood flow. Stents are usually coated with medicines that are capable to stop the redevelopment of the fat molecules, of fat deposition. बल्कि ये देखो fat depositions, redevelopment of the fat depositions in that particular, क्योंकि एक दफा अगर जहाँ पे वो थ्रोम्बोस बन जाता है ना, तो अगली दफा भी वहीं पे जाके फैट बनना शुरू होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना, इसको कोलैप्स ना हो, इसके अंदर जो है ना दवा लगा दी जाती है, अंडरस्टैंड। सो ये होता है कि बेसिकली जो मैश वर्क होता है ना स्टेंट का, जैसे ये आर्टरी है ना, ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना जब फैट वगैरह सब ये रिमूव हो जाएगी, तो फिर ये क्या होगा कि इधर की तरफ ये स्टेंट बना, ये स्टेंट इसमें आ गया, जाली होती है, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो जाली होती है इसके ऊपर दवा लगी हुई होती है चारों तरफ, सही है, दवा लगी हुई होती है, सही। अब इसमें ये होता है कि जब ये ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली ब्लड जो होता है ना वो इजीली इसमें फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अब होता ये है कि कुछ टाइम बाद ना ये कवर हो जाती है, क्या होता है ये अंदर छोड़ देते हैं इसको, और फिर एंडोथेलियम लाइनिंग जो होती है ना वो इसको कवर कर देती है अंदर, इसके ऊपर पूरी एंडोथेलियम लाइनिंग ग्रोथ कर देती है, ठीक है। जब एंडोथेलियम लाइनिंग इसके ऊपर ग्रोथ कर लेती है ना, तो फिर ये होता है कि ये अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ना डिजोल्व हो जाती है,
एक तो वो वाले होते हैं जो डिजोल्व होने वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली वहां पे स्टे करते हैं, दैट मीन्स वो डिजोल्व नहीं होते। गॉट इट? अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। हम्म। The gene for antibodies are only active in lymphocytes. Define the term gene. हाँ भाई, जीन की डेफिनेशन क्या है? That codes for a protein. Gene is the part of DNA, ठीक है, that codes for specific proteins. Gene is made up of three nitrogenous base pairs, base pair, which represents one character. One character. कोई एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी। Lymphocytes produces antibodies. Outline the role of antibodies in the defense of the body against pathogen. ठीक है, रोल ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। तो एंटीबॉडी के बहुत सारे रोल होते हैं। एंटीबॉडीज ट्रैप्स द पैथोजन and locks its movements in the body and in the body. Wait. Antibody antibodies once attaches to the pathogen, to the antigen in other words pathogen, ठीक है, will cause the agglutination reaction. That stops pathogen spreading and helps in phagocytosis. Macrophages who phagocytes the pathogen. Antibodies could also puncture the pathogen cell body on the spot, on the spot as it attaches. Attaches to them. ठीक है। यस। अच्छा, फॉर एवरी पैथोजन और एंटीजन
specific antibodies are produced. They also give both active and passive immunity. Passive immunity against antigen. एंटीजन का मतलब क्या? पैथोजन. ओके. Yes. Now the next question. Figure 2.1 is a drawing made up of electron micrograph of lymphocytes that produce antibodies. Okay. अच्छा, फुल सेल है, ठीक है. इसकी लेबलिंग कर लेते हैं. अच्छा, हमारा रिवीजन हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियस. फिर इसके अलावा दिस वन इज राइबोसोम, दिस वन साइटोप्लाज्म, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और वेसिकल. वेसिकल क्या होगा? This one is rough endoplasmic reticulum, RER. Rough endoplasmic reticulum, RER. ओके. अच्छा, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं. Table 2.1 contains statement about the structure visible in figure 2.1. Complete table 2.1 by naming the structure, identify the labels in the structure. Okay. Absorption of amino acid used in making antibodies, cell membrane A. Okay, ठीक है. Stores genetic information as DNA. ठीक है. तो ये तो बेसिकली न्यूक्लियस है. अच्छा, न्यूक्लियस है और इसकी जो लेबल है वो कौन सा वाला है? B. ओके. अच्छा, एक बच्चे दे बताता जाए, तेरे पास पिक्चर खोल दे. ठीक है, मैं लिखती जाती हूँ, तुम बताते जाओ. न्यूक्लियस बी. अच्छा, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज. Mitochondria, E. माइटोकॉन्ड्रिया ई. शाबाश. साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज राइबोसोम्स. Ribos, G. C. ठीक है, राइबोसोम भी लिख सकते हैं और आरईआर भी लिख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो ये सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स फॉर रिलीज इन द ब्लड. Vacuole, इसका होगा F. हाँ, वैक्यूम भी लिख सकते हो और जो मैंने लिखा था ना वेसिकल, वो भी हो सकता है. दोनों सही है. ठीक है, और लेबल क्या है? F. एफ. ओके. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. State the name of one type of a cell other than the lymphocyte that is involved in defense of the body against pathogen and describe its role. Yes, simple. Phagocyte. Phagocyte, macrophage. इसका दूसरा नाम मैक्रोफेज है. अच्छा, इसमें रूल क्या है? ingest, engulf the pathogen with or without help of antibodies. ठीक है. अच्छा, पैथोजन में कौन कौन से आ जाते हैं? पैथोजन में भी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस. ओके.
ऑल ऑफ देम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। Heroin is a drug that acts on the nervous system. Define the term drug. The drug is a chemical that changes the internal environment, normal internal body environment and metabolism. Yes, ये हम ये भी कह सकते हैं any chemical substance ठीक है, any chemical substance taken into the body that modifies or change the chemical metabolism. Biochemical activity of the body. That is metabolism of the body. Okay. Okay, now the next question. There are pain receptors in the skin. These receptors transmit impulses along the sensory neurons to the spinal cord. Figure 3.1 shows the synapses between the sensory neuron A and a relay neuron and a sensory neuron B and a relay neuron in the spinal cord. Okay. Figure 3.2 is an enlarged view of the synapse between the sensory neuron A and the relay neuron as indicated by the circle on figure 3.1. Sensory neuron and this one is the relay neuron. ठीक है? Sorry, this one is the sensory, impulse to the sensory region of the brain. Relay neuron in the spinal cord. ये relay neuron है और ये sensory neuron है. ठीक है? ये इसको जो है ना जैसे कहा synapses के जरिए जो है ना nerve impulse transmit करता है. Sensory neuron forms a pain receptor in the skin. ये pain receptor बन रहा है. ठीक है? सेंसरी न्यूरॉन भी ये भी आके लग रहा है. ठीक है, फ्रॉम द पेन रिसेप्टर ऑफ द स्किन. और ये सारे के सारे जो है ये अंदर से इसमें वेसिकल फॉर्म हुई हुई है छोटी छोटी जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड भरा हुआ है. और यही जो है ये यहाँ से नर्व इम्पल्स न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड के थ्रू वेसिकल्स के थ्रू जो है प्री साइनेप्टिक नोड से पोस्ट साइनेप्टिक नोड की तरफ जाएंगी. इसमें देखो ये जो है ना यहाँ पे प्री साइनेप्टिक नोड से जहाँ पे वेजिकल आके डिस्ट्रक्ट होगी मतलब फटेंगी. और ये जो है ये दूसरा दैट मीन्स ये वाला पार्ट है रेडे नर्व फाइबर का. यहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स. ओके, अच्छा भाई अब वो ये बोल रहे हैं डिस्क्राइब हाउ इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्सेस. ठीक है, साइनेप्सेस का जो है ना पूरा प्रोसीजर जो है वो बताना है. ठीक है, वेसिकल्स फ्रॉम द sensory neuron carries nerve impulse to presynaptic node where it releases the nerve impulses to the liquid that is called neurotransmitter fluid. ठीक है,
in neurotransmitter fluids, meter fluid, nerve impulses travels from presynaptic node to postsynaptic nodes on the Rayleigh nerve fiber, Rayleigh neuron. From here, all nerve impulses carries to brain. Okay, और मे बी नेक्स्ट न्यूरॉन, किसी दूसरे न्यूरॉन तक भी जा सकती है। ओके, अच्छा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन,